for my today's discussion is documentary evidence excludes oral evidence. So I will be discussing with you people today Article 102 and 103 Qanun-e-Shahadat Order 1984 managed by Law of Evidence in Pakistan. The name of the chapter is of the exclusion of oral by documentary evidence. Actually, while understanding the concept of law of evidence, एक प्रिंसिपल को हमेशा ज़हन में रखिएगा, एक रूल को हमेशा ज़हन में रखिएगा, एंड दैट इज रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. Rule of best evidence provides that best available evidence must be produced by the parties. और presumption law में ये है जी कि अगर किसी पार्टी ने बेस्ट अवेलेबल एविडेंस जो पेश की जा सकती थी विद होल्ड की है और पेश नहीं की, तो presumption ये ड्रॉ होगी कोर्ट में, प्रिज्यूम कि इसने इस वजह से पेश नहीं की, ये पेश करता तो इसके खिलाफ जाए. This rule of best evidence governs the entire Qanun-e-Shahadat order. So, these two articles, ये भी rule of best evidence की वजह से. Just to refresh your memory, I will be reading for you people both the articles and then I will be giving my own input. Article 102 provides as under: evidence of terms of contracts, grants and other disposition of property reduced to form of document. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of this same of such contracts, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself. Article 103 provides exclusion of evidence by oral evidence when the terms of such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved. According to the last article, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between parties to an instrument or their representative interest for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting from its terms. So 102 क्या कहता है? आर्टिकल 102 कहता है कि अगर दो पार्टीज हैं और उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट टू सेल और वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कर लिया है, ज़ाब्ता तहरीर में ले आए, नंबर 1 सिचुएशन. नंबर 2, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर इट मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म. दो चीजें हो गई. अगर पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट इन राइटिंग कर लिया है, नंबर 1. नंबर 2, वेयर लॉ सेज कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो मस्ट बी इन राइटिंग. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग. यस, निकाहनामा. लॉ सेज इट मस्ट बी इन राइटिंग. तो अगर ये दो सिचुएशन है तो उन्हें प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विल बी प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस. क्योंकि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है दैट इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स. 103 is extension of 102. 103 provides that when some contract has been reduced into writing, number 1, and number 2 वही जहां लॉ कहता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है
तो इट मस्ट बी इन राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल निकाह नामा, एग्रीमेंट टू सेल, विल. ऐसी सूरत में अगर एग्रीमेंट हो गया है तो उस पे वर्बल एविडेंस अगर कोई पार्टी देना चाहती है कि जी लिखा तो ये हुआ है लेकिन बाद में हम दोनों ने वर्बली ये तय कर लिया था, यानी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने चेंज कर दी, तो लॉ कहता है कि ऐसा कोई ऑरल एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता. बिकॉज ए डॉक्यूमेंट कैन बी रिबटेड बाय ए डॉक्यूमेंट. अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस can be rebutted only by a documentary evidence. Why? Because of rule of best evidence. So, फर्ज किया एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक किराएदार और मालिक मकान के दरमियान एग्रीमेंट हो गया. एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 1 लाख रुपया हर माह की 5 तारीख को किराएदार मालिक मकान को देगा. डिस्प्यूट आ गया, एडजस्टमेंट पिटीशन आ गई, रेंट कंट्रोलर के पास मैटर है. एक पार्टी किरायादार ये एविडेंस देना चाहता है, जी लिखा तो ये जरूर है, मेरे साइन भी हुए हैं विटनेसेस की मौजूदगी में, लेकिन बाद में ये तय पाया था, बारिश हो गई थी फॉर एग्जांपल, छतें खराब हो गई थी, मालिक मकान ने मुझे कहा था कि तुम रिपेयर कर लो, किराया तुम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तुम 80,000 किराया दे दिए करना. वो ऐसी एविडेंस पेश करना चाहता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को वेरी करने का तल्लक है, चेंज करने का तल्लक है. इट कैन नॉट बी गिवन एज एविडेंस. दिस ऑरल अकाउंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड इट इज हिट बाय आर्टिकल 103 कानून शहादत ऑर्डर. सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स ऑरल एविडेंस. और चैप्टर जो है उसका नाम भी चैप्टर 6 जो है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो इन शॉर्ट, कीपिंग इन व्यू रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ए contract have been reduced, number 1. Number 2, when law says this type of contract must be in writing, then that document is the only piece of evidence which can be produced itself, or if itself cannot be produced, where the secondary evidence, आर्टिकल 76 में अगर केस आपका फॉल करता है, जहां जहां सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस देंगे. और 103 जो है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो ये कहता है कि अगर इन राइटिंग डॉक्यूमेंट आ गया है, कंटेंट्स आ गए हैं इन राइटिंग, और कोई पार्टी उस पर वर्बल एविडेंस देना चाहती है कि लिखा तो ये हुआ है और बाद में ये हो गया था, तो इट इज नॉट अलाउड एज पर कानून शहादत ऑर्डर 1984. एंड विद दिस, ऑन दिस पॉइंट, माय टुडेज लेक्चर इज ओवर. स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी.